Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. I am back with the new video. Today we will complete chapter number 2, Economics Standard 11, and the chapter name is Fundamental Concept and Terminologies. So in this chapter we will learn fundamental concept, basic concept and terminologies, as this is the basic for you, as this is the new subject for you. So let us start. The first two terminologies are price and value. So let us start. Price is your financial reward for providing the product or services. So price होता क्या है बेसिकली? किसी भी चीज़ के पीछे या किसी भी सर्विसेज के पीछे पैसे खर्च करना या पैसे कमाना, उसे हम प्राइस बोलते हैं. बट वैल्यू इज वॉट योर कस्टमर बिलीव्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज वर्थ टू देम. मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो वर्थ रहता है, जो इम्पोर्टेंस रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. इफ़ यू गॉट एनी सर्टिफिकेट और ट्रॉफी बाय विनिंग द कंपटीशन, however that certificate or trophy is free, but that is very valuable to us. So here the price is less or price is zero, but the value of that product or service is very high. So here these are the two concepts, price and value. Okay. The second one we have use value and exchange value. So let us start with the first one. The use value determined by the usefulness if a commodity to a customer for his or her various needs. For an example, food, water, sunlight, etc. यूज़ वैल्यू उसको बोलते हैं जो कमोडिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, फूड खाना, वाटर एंड सनलाइट, ये ऐसे एग्जांपल है जिनकी यूज़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं. मतलब वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जबकि एक्सचेंज वैल्यू, दिस इज इन द टर्म ऑफ मनी. व्हेन अ कमोडिटी इज एक्सचेंज विथ अनदर कमोडिटी और सर्विसेज, देन the with one of the unit of a commodity is known as exchange value. Just an example, rupees 100 for 1 kg of grain. तो अगर किसी भी कमोडिटी को हम किसी भी अदर कमोडिटी या तो फिर सर्विस के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू मिलती है उससे हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू. जैसे कि इन प्रीवियस देर वॉज अ प्रिवेलिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले में चीज़ों का जो एक्सचेंज हुआ करता था. बट वो भी आप ले सकते हो और यहाँ पे हम पैसों को भी ले सकते हैं. अगर आप 100 रुपये में किसी भी तरीके के ग्रेन्स ला सकते हो, तो वो ग्रेन की एक्सचेंज वैल्यू जो है या वो मनी की वैल्यू जो है वो दूसरा प्रोडक्ट, जैसे कि 1 kg ग्रेन्स की एक्सचेंज वैल्यू हो गई 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की एक्सचेंज वैल्यू हो गई 1 kg ग्रेन्स. The third one, goods and services. Now, these are very important things which we should always should take care of this. A good is a tangible item that customer desire or own. जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं. दीज आर टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी ओन और डिज़ायर टू हैव. ऐसी कोई भी चीज़ें जिनको हम खरीदना चाहते हैं या वो हमारे पास हैं. द सर्विस, a service is not a tangible or a physical entity, but it still sought after by a consumer. So सर्विसेज क्या होती हैं? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, बट मार्केट में ये सर्विसेज भी बेची जाती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, प्लम्बर हो गया, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए. दिस पीपल दे नेवर गिव यू एनीथिंग, बट दे चार्जेस यू फॉर द सर्विसेज. जैसे कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो एक जगह से आपको दूसरी जगह माइग्रेट करवाने के पैसे लेता है. एक लॉयर आपके केस लड़ने के पैसे लेता है. अ टीचर चार्जेस यू फॉर ट्रेनिंग. ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स विच आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द service sector. Okay, apart from this we have durable and perishable goods. Let us start. Durable goods can be used for a long period of a time rapidly. For an example, shoes, clothes, television, refrigerator or so on. Perishable goods cannot last for a long time or consumable only was. For an example, milk, fruits and so on. तो ड्यूरेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा समय तक चलती है. तो ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए? ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा समय तक चलेगी. और पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दीज आर द एग्जाम्पल. पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो कुछ पीरियड में जो है वो ख़राब हो जाएंगे.
ठीक है, सो इनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. सो द सिंपल थिंग इज ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल. देर आर टू डिफरेंट, टू ऑपोजिट टाइप ऑफ गुड्स वी हैव. Okay, next we have private goods and public goods. Let us start. Goods are classified as a private goods and public goods based on their ownership and nature of use. Private goods are goods which can be possessed or owned by a private individual. He or she takes all decision regarding this goods. So प्राइवेट गुड्स हम उसको बोलते हैं जिसका ओनर जो है एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसके सारे डिसीजन जो है वही इंसान जो उसका ओनर है वो लेता है. दिस गुड्स possesses the characteristics of extraability and competitiveness. Exclusivity means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess use to it at the same time. तो ये सिंपल चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ अगर मैं ओन कर रहा हूँ, सो द अदर पर्सन कैन नॉट ओन द सेम थिंग बिकॉज दैट थिंग इज माइन. सो आई एम द एबल पर्सन हु कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट. अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, ऑन द कॉन्ट्ररी पब्लिक गुड्स कैन बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम. दे possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिव कंजप्शन. Such goods are jointly demanded by many people. If one individual use it, other cannot be excluded from it the way they are collectively consumed. Hence, these are public goods. They're either provided by the government for all some people to pay it all together. For an example, public garden and garden or housing society. तो पब्लिक गुड्स ऐसी चीज़ें रहती है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और पर्टिकुलर ग्रुप, and this is not only for a particular person. At the same time the many people can use the same product. Like जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करते हैं अ गार्डन. सो गार्डन इज नॉट अ इंडिविजुअल ओनरशिप. द गार्डन इज अ public goods which can be used by many people at the same time. ठीक है, there are many examples. That's your homework. You need to find out 10 of the private goods and 10 of the public goods examples. Okay, then we have consumer goods and producer goods. So before we start, you should see the picture. In the first picture we have the people who are making bread and second one is consuming bread. So for the people who are making bread, for them this bread or this dough or this maida is a producer goods. However, for the second picture, that is consumer goods, because consumer is directly consumption, that person is taking consumption of particular thing. In the same second scenario, we have a factory where you can see threads over there and they are making cloth. So that is product for producer. That goods is for the producer, and the for in second picture that is consumer goods, because consumer is directly taking the product. Okay, goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a customer consumes a goods at this good is capable to satisfy a particular want direct, then it is called a consumer good. These goods have a passed the final stage of production. For an example, cooked food, they satisfy human wants directly. So कंज्यूमर फूड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुके हैं and they are ready to use. Okay, when a good is used at an intermediate stage, intermediate का मतलब रहता है बीच का stage of production of a final good, when it is purchased by a producer to produce a final good, when it is not directly consumed by the consumer but it could help in the production of final good. तो प्रोड्यूसर्स गुड्स कैसे रहते हैं? ऐसे गुड्स जो अभी तक रेडी नहीं हुए बट हाँ वो उस फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए क्या करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या तो प्रोड्यूसर गुड्स. यहाँ पे वी डू हैव सम एग्जांपल. कॉटन यूज टू मेक अ क्लोथ, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. मशीन यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गारमेंट्स. A tractor which facilitates in producing food grains. A utensil used in a cooked food. They satisfy human wants throughout the final goods and not directly. तो ये प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते बिकॉज वो इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे. जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तब वो डायरेक्टली कंजप्शन के लिए, मतलब वो कंज्यूमर फूड
कंज्यूमर गुड जो है वो बन जाएगा. Okay, now the most important thing we have, that's this question is very important for everyone. Let us understand the concept. The topic is factor of production. Now, what factor of production is? When we produce anything, what thing we must have? Like the first one is land. We should have land where we need to work. ठीक है, हम जहाँ काम करेंगे उसके लिए हमें एक लैंड चाहिए. सेकेंड, वी हैव लेबर. सो हु विल वर्क ओवर देयर. हमने ज़मीन दो खरीद ली, वहाँ पे काम कौन करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए. थर्ड वन इज कैपिटल. तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए वी मस्ट हैव अ कैपिटल. सो कैपिटल, यू मस्ट नो दैट कैपिटल, इट शुड बी कैश, इट शुड बी एनी मशीनरी, इट शुड बी एनी व्हीकल, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करती है उसे हम कैपिटल बोलते हैं. फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ऑल फोर फैक्टर्स, जैसे कि लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो इन चारों चीज़ों का जो ध्यान रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल, लाइक एज यू कैन सी, वी हैव लैंड एज वेल, वी हैव लेबर एज वेल, we have capital like tractor as well, and we have one person who is taking care of this, so that person is called entrepreneur. Okay, now let us talk about trade cycle. The trade cycle is divided into four different parts: irregular changes, seasonal changes, long run regular trend, and long run dynamic changes or cyclical. The first one is irregular changes. These are accidental changes which occur in economic activity, example flood, famine, storms, fires, so on. Such accidents impact on economic activity in short run and sometimes for a long term. These changes may generally occur or have their impact in some sectors, some regions or economy only. For an example, only in agriculture sector or only in industrial sector. तो यहाँ पे हम इसकी बात करें, सो एज वी हैव सीन कि अगर कहाँ कभी बारिश पड़ जाती है, मतलब ज़्यादा बारिश पड़ जाना, फ्लड आ जाना, या ड्रॉट सूखा पड़ जाना, या वी वर द विक्टिम ऑफ कोरोना, कोरोना के बारे में हम जानते ही हैं. सो दीज वर द पीरियड जिनको हम इरेगुलर चेंजेस बोल सकते हैं, बिकॉज दोज वर नॉट प्रिडिक्टेड. एक्चुअली उनका कोई प्रिडिक्शन था नहीं, बट दीज वर सडन, और कुछ पीरियड तक की जो इम्पैक्ट था रहा, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई. द सेकेंड वी हैव सीजनल चेंजेस. These changes regularly occur in economic activity with changing seasons. For instance, demand for certain goods changes by season, or accordingly production and the employment may change. तो यहाँ पे, so basically in seasonal changes this can be predicted, as we all know, like in summer season the demand for the cotton cloth, in winter season the demand for woolen cloth, and in rainy season the demand for raincoats and umbrellas. And in religious manners like Shivratri, Mahashivratri, and then Janmashtami. So this, on these periods, in Navratri, in these periods, the selling of flowers, it also get increased. Then we have long run regular changes. Some changes occur in given direction in the form of trend. These are directional changes which occur of activity. For an example, some regular sales trends. So these are the long term changes which occurs in the economy. Like the people are now used to have western clothes. So this is a long term trend, we can say. So it will take around 10, 20, 30, 40, or more than that as well. So the trend will change, but this is a long term process. Then we have cyclical changes. Dynamic fluctuation arising in economy over its long run growth, leading to rise in growth of economic activity and fall downwards, are called trade cycles. The rise fall in economic activity is cyclical nature. So basically cyclical in the sense, you must have learned about boom, recession, or we gonna to learn about this. So these are the cyclical changes which every market have to face these changes. Okay, now that's we gonna to learn now phases of trade cycle. The first one is boom,
second recession, third one is depression, and fourth one is recovery. Now let us start with boom. This is the period when economic activity reaches the maximum growth level in a given period. Demands have peaked, so have incomes and profits. Thus, this period is also known as peak. So, boom period is a period where you can have many number of customers. You can earn maximum profit because the demand of the product which you produce is very high in the market. So this is a period where you can earn maximum profit. So that's a good and positive period for you. Second, we have recession. This period follows the period of boom. When economic activity peaks in a given period of investment, employments have reached in the highest possible levels. A slowdown occurs, demand slow down, investment and employment follow. So what happens here? Recession means in Hindi word it called mandi. Now after every boom, like the process goes slow down. Let's have an example. The selling of crackers in Diwali. So that was the boom period where the seller of crackers were earning a huge profit. But after some time that gradually goes down. So this period is known as recession period. Then we have depression period. The slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activity reaches the minimum level. Under those circumstances, the confidence of buyers, producer, and the investor in the economic activity is at the lowest. In this phase of recession, consumer starts expecting further fall in the price and reduced demand in expectation of further price fall. With the fall in demand, production falls and employment falls, causing further reduction in the demand. Thus, the depression is caused. So now depression is a long-term period where there is no demand of product. Consumer always ask for the low price, and consumer always wait to buy a product because they always want the price must go down more. So this is the period which impacts for a long term period, and that can be considered as a depression period. Then we have recovery. When depression lasts for some time, then suppressed demand starts emerging. Government may try to boost investment and employment in certain types of technology. Changes happen in the long run. This leads to recovery of demand, employment, and investment. This type of cycle occurs all economic activities in long run. However, in market oriented economies, this occur more openly while they may be suppressed by the state in the state controlled economy. So now what is recovery? After the period of recession or depression, when market starts growing again, when market starts or the consumer starts demanding, in this period is called recovery period because gradually or slowly the demand of product is being increased. This is the end of this chapter. Let me know if you have any doubts. Comment below. Subscribe my channel. Stay safe. Have a great day. Bye bye.